Assalamu alaikum to everyone. This is your instructor Saif Rizana. Hope so you guys are enjoying great health. As you are well familiar that today is our 19th lecture of our YouTube channel, and today's topic of discussion is modal verbs. Before starting our today's topic of discussion, if you are new on our YouTube channel, then it's my humble request to like, subscribe and share our official YouTube channel English with Professor Fezan with your dear and near ones. Let's start our today's topic of discussion, and that is modal verbs. The very first question that arises into our mind is why do we use modal verbs? Modal verbs के बारे में अगर बात करें तो basically modal verbs are those verbs that indicates our states or our modes, just like our ability, our possibility, our obligations, our prohibitions, and even though to make request or offers as well. तो ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें और जो सारी की सारी फंक्शनैलिटी है, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स ही परफॉर्म करते हैं. पहला मॉडल वर्ब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट मॉडल वर्ब इज कैन. इसकी 4 कंडीशंस आती हैं. वन बाय वन चारों कंडीशन डिस्कस करते हैं. पहली कंडीशन इज इट इज यूज फॉर एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द पियानो वेरी वेल, आई कैन स्विम, आई कैन डाइव. Second condition is use for permission. For example, can I go now? Can I use your computer? In both of these sentences, we can clearly see that in both of these sentences, we are asking a permission from someone. As we are asking permission, so it's a condition of a can. That is a modal verb, and it's a state of use for permission. Third condition of can is used for possibility. For example, it can be a very good day tomorrow. It can be a good decision. Fourth condition is used for request. जैसे हमने पहले बात की थी 4 कंडीशन है. चौथी कंडीशन इसके है used for request. For example, can you please tell me your phone number? Second example is that can you please give me your address? In both of these sentences, we are requesting something from someone. So that clearly shows it's a condition of asking a request, and it's a part of the modal verb can. Second in type of the modal verb is could. इसमें तो 2 कंडीशंस आती हैं. पहली कंडीशन इज यूज फॉर द एबिलिटी इन द पास्ट. सेकंड कंडीशन इसकी आती है यूज फॉर द आस्किंग ए रिक्वेस्ट. अगर हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करें तो यूज फॉर एबिलिटी इन द पास्ट, इसकी फॉर एग्जांपल आई कुड प्ले पियानो वेरी वेल व्हेन आई वाज 9. सेकंड सेंटेंस, आई कुड स्विम बट राइट नाउ आई एम सिक. इन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस, 2 sentences, द सेंटेंस स्टेट्स अबाउट द पास्ट. सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें तो सेकंड कंडीशन इज आस्किंग फॉर रिक्वेस्ट. Can you please give me your phone number? Second example is can you let me know about the postal address of your. Next type of the modal verb is may. इसकी भी 2 कंडीशंस आती हैं. पहली कंडीशन यूज फॉर परमिशन और सेकंड कंडीशन इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी. अगर हम परमिशन के बारे में बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मे आई लीव अर्ली, मे आई कम इन. इन दोनों सेंटेंसेस में देखें तो हमारे पास क्लियरली तौर पे शो हो रहे हैं कि वी आर आस्किंग ए परमिशन फ्रॉम समवन. सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करें तो यूज फॉर पॉसिबिलिटी, यानी किसी कंडीशंस के बारे में. टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें आ जाती है पॉसिबिलिटी के, आइदर इज इट पॉसिबल और नॉट. इसके बारे में अगर हम एग्जांपल देखें तो मे आई लीव अर्ली. सेकंड सेंटेंस देखें तो कैन आई गो विथ यू, मे आई गो विथ यू. इन दोनों मॉडल वर्ब्स में क्लियरली पता चल रहा है कि एक में परमिशन है और एक में पॉसिबिलिटी है. तो दोनों सेंटेंसेस से हमें, दोनों एग्जांपल्स के जरिए से हमें सब कुछ क्लियर हो गया है. वेल, ये आज का इतना हिस्सा था. नेक्स्ट जो है हम लोग रिमेनिंग मॉडल वर्ब्स की टाइप्स डिस्कस करेंगे. जैसे हमने बात की थी कि हमारी तकरीबन 12 टाइप्स हैं और इसमें से अभी हमने सिर्फ 4 डिस्कस की हैं. तो रिमेनिंग 8 टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज के लिए 4 टाइप्स हैं. वेल, I would love to say that
If you are new on our YouTube channel, then it's my humble request to kindly to like, subscribe and share our official YouTube channel with your dear and near ones. Thank you. Allah Hafiz.